Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical update. On the technical front, Nifty yesterday opened higher and witnessed a range-bound price action throughout the day. On the daily chart, we can observe that Nifty has managed to close in the positive for the third consecutive day. It's slowly inching higher towards the previous swing high 18,778 and lead to further upside. So we can, for the today's trading session, we can expect a closing or a short covering may be possible, but overall bias for the Nifty is still strong. As per higher top, higher bottom structure, which is also suggest a positive bias for the Nifty. If we see on the Bank Nifty front, yesterday Bank Nifty has a close in the negative, and it has been trading in narrow range around the 44,000 levels. So if Bank Nifty given a close above 44,000 levels, then Bank Nifty also contribute in this rally, and we expect a Bank Nifty to hold on this support level. And now if you see on the derivative data front, Nifty future OI saw a long build up to the tune of 6%, addition of 0.61 million shares. Total outstanding position currently at 10.89 million shares. And Nifty PCR is saw uptick, which is a close at 1.23. If we compare to previous closing is a 1.13. So Nifty PCR is above 1, so it can go up to 1.5, which is a positive. Bank Nifty PCR saw downtick and close at 0.73 as compared to its previous closing is a 0.87. If we compare the both PCR, so both the PCR is in the opposite. Bank Nifty PCR is up above one level and Bank Nifty PCR is down below 1. And if you see on the Bank Nifty future, OI indicates that there was a long unwinding seen in the index and the reduction of OI by 1.34 percentage, so 0.04 million shares. So if you see that the both are trading in opposite, which are usually unlikely. Nifty future witness a long build-up and Bank Nifty is a long unwinding. So overall trend for the Nifty is a positive and strong, and trend for the Bank Nifty is a range bound. So if you see on the OI front, so major addition happened in the call option front in Nifty at 18,900 strike. Saw addition of OI to the tune of 11.70 million shares. While on the put option front, major addition were seen at 18,700 strike, addition more than 16.12 million shares. On the Bank Nifty front, major addition happened in the call option front at 44,000 strikes, which is addition OI around 64.58 million shares. And same for the put option front, same major addition were seen in 44,000 strikes. So which is a addition more than 52.81 million shares each. So for the Bank Nifty, 44,000 level is an important levels to watch out. And for the Nifty, 18,450 will be the support zone and 18,800 or 18,850 will be the resistance. On the FI front, FI added longs around 8,226, net short long by 12,516. So overall net short long ratio is a 53.82 percentage. The ratio is also showing the good sign. On the cash segment, FI bought 1,714.72 crore and DI sold 654.77 crore. Long build-up were witnessed in Tata Consumer and OFS. Short build-up were witnessed in HDFC, AMC, Chamberford, and Wipro. So that's it from my end. I will hand over to Bunty sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from my side. Yesterday, Union Bank has kept the analyst meet, which we have attended, which was represented by Madam Miss Mani Mekhalai, who is an MD and CEO, Executive Directors, and Vertical Heads. So the key highlights are as follows. Management has highlighted various initiatives has been taken by the bank to strengthen its digital capabilities, performance of various business segments, and growth aspirations of the bank in the near term. The bank currently is in the process of digital infrastructure and capability transformation, which is based on three key pillars or three E's: experience, engagement, and enablement. With a strong digital transformation in place, management targets to acquire around 1 crore additional CASA customer over the next 3 years and acquire additional 50% of the incremental advances
in RAM or retail, agri and MSME group digitally. Further, stress levels in the bank has reduced from 15 to 16%, which was 3 years back, to around 3% by the end of FY23. And management guided that further gross NPA should come down from 7.3% to below 6% by end of FY24, which should be supported by strong recoveries of around 16,000 crores and lower slippages of around 12 to 13,000 crores in FY24. Further, management has guided advance growth of 12 to 13% and deposit growth of 10% in FY24, which includes sustaining of NIMs at around 3% levels. Management has also highlighted that IT related capex to be around 1500 crores in FY24, and bank shall be raising the capital to meet the guidelines of SEBI, which says that the promoter stake should be below 75%. In this case, the government stake should have to be come down below 75%. Actually, they don't require any growth related capital as such. So this seems to be a positive commentary from Union Bank management. Next is on the JSPL. JSPL has announced a restructuring plan for its subsidiary Jindal Steel and Power Mauritius Limited, reducing the outstanding loan by 7,700 crores. Due to this economic uncertainties, JSPML faced difficulties leading to investment decline. JSPL allowed a balance sheet restructuring without impacting its income statement. Thus, the promoter group, and group companies have no involvement or interest in this restructuring. Sorry, their shareholding pattern of any entity remains unchanged. So, this restructuring seems to be positive for the JSPL as a whole. Next is on the Tech Mahindra. The news suggests that the case has been filed by a former employee of Tech Mahindra. Previously, the court has earlier dismissed the appeal, but now higher court has reopened this case. We believe this continues to happen thereafter and however, we don't see any impact on the stock per se as such, though seems to be sentimentally negative. Uh, s- Next is on the HCL Technologies. HCL Tech and Google Cloud have expanded the partnership to support enterprise leverage generative artificial intelligence, that is AI, and develop joint solutions powered by Google Cloud's generative AI technologies. So this seems to be the positive news with respect to HCL technology. Next is on the IT sector as a small update. Yesterday, US rate hike has not been, US has paused the rate hike, which seems to be bodes well for IT companies, though they have indicated there are two further rate hike possible. But we believe this, if the inflation part or the data seems to be positive, there should not be any rate hike, or there should be the rate pause for a further few quarters or few months as well. So this indicates that the probably H2, or you can say second half of FY24 onwards, things should start improvement for IT sector as a whole. So we should watch out for these numbers or these US decisions going forward with their respect to impact on the IT sector. So this seems to be positive with respect to IT sector. That's it from my side. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, sir. So, starting with the further news updates, some news related to the economy. The data released on June 14th by the Commerce Ministry showed that India's wholesale prices sank deeper into the deflationary zone in the month of May. The wholesale price index inflation fell to minus 3.48% from minus 0.92% in the month of April, with a favorable base effect again playing a starring role. At minus 3.48%, the latest WPI inflation print is the lowest in 7.5 years. The last time wholesale inflation was lower was in November 2015 when it had come at minus 3.68%. The next update is about Axis Bank, where a global private investment firm Bain Capital is likely to sell a stake up to $267 million in the bank.
The stake sale is likely to take place in the offer price range of rupees 964 to 977.70 per share. Further update is on KFin Technologies, where the Register and Transfer Agency has reconsidered its decision to become the depository participant with National Securities Depository. It has withdrawn the application to become a depository participant. KFin had filed an application to become a depository participant with NSDL on 17th October 2022. Tega Industries, the National Company Law Tribunal, has given its approval for the composite scheme of arrangement between Nihal Fiscal Services, promoter of Tega Industries, Marudhar Food and Credit, and M&M Group Holdings, which are all part of the promoter group of the company. With this approval, MFCL will merge into NFSPL, and the entire shareholding of MFCL, that is 1.96% equity in Tega, will stand transferred to NFSPL, resulting in a holding of 57.05% stake in Tega. The next update is on Indian Overseas Bank, where the public sector lender has decided to increase the base rate by 20 BPS to 9.10% from 8.90% earlier. The base rate hike will be effective from June 15th. Indian Oil Corporation, the company will set up an 80,000 tons sustainable aviation fuel plant with Lenza Jet in Haryana. The company is looking at an investment of about $23 billion. The refiner is also running a pilot project for green fuel in association with Praj Industries in the western state of Maharashtra. Next update is on Hero MotoCorp, where the two-wheeler major announced a launch of its new Extreme 160R 4V in the premium motorcycle category at an ex-showroom price starting at rupees 1.27 lakh. Mahindra and Mahindra and Ashok Leyland, the automobile major companies, have joined the race to acquire a significant stake in MG Motor India, which is a wholly owned arm of Shanghai headquartered SAIC Motor. The investment banking sources had come up with this update. The The next update is on DCW, where company informed Bombay Stock Exchange that there has been unforeseen mechanical breakdown of CO2 gas compressor in soda ash plant, and this will result in a lower production of soda ash by an estimated 6 kmt in the current quarter. The next update is on CONCOR, that is Container Corporation of India, where the Department of Investment and Public Asset Management might seek the intervention of an inter-ministerial group and top finance ministry officials for cooperation in the stake sale of the company. The government seeks to sell stake worth rupees 12,000 crores in the national transporter this fiscal as a part of disinvestment target. The final update is on REC, where company's board is scheduled to meet on June 24th to consider a proposal for final dividend for FY 2023, if any. So this was all from my side. Now handing it over to Hitendra for further updates. थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में करते स्टार्ट करते हैं। आईटी सेक्टर के साथ जैसे हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट यूएस में अभी रेट हाइक्स करना पॉज कर दिया, तो ओवरऑल लेकिन सेंटिमेंटली पॉजिटिव लगता है। हमें लगता है कि एक बार रेट हाइक्स पॉज होता है तो उसको रीसेट करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें या इंडिकेटर्स चाहिए थे जो उसे रीसेट कर सके। सो ओवरऑल हेल्प करेगा आईटी सेक्टर को बूम करने में। सेकेंडली इसी सेक्टर से देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी और गूगल क्लाउड ने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें एक पार्टनरशिप बनाई है जो कि एआई बेस्ड डेवलप जॉइंट सोल्यूशन करेंगी, जो कि गूगल क्लाउड एआई जनरेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए रहेगा। तो ओवरऑल एचसीएल टेक के लिए पॉजिटिव। टेक महिंद्रा के लिए न्यूज है कि एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने टेक महिंद्रा के ऊपर केस किया है और ये कोर्ट ने पहले डिसमिस कर दिया था और वापस ये केस रीओपन किया है, तो इसके ऊपर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है स्टॉक पे। जीएसपीएल ने एक अपडेट दिया कि वो एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बना रहे हैं अपने सब्सिडी जीएसपीएल मॉरिशस के लिए, जो कि उसमें से जो आउटस्टैंडिंग लोन है 77 बिलियन का
रिड्यूस करेंगे और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से जीएसपीएमएल में भी डिफिकल्टी सीएसपी पे इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होते हैं। जीएसपी ने भी अपनी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर और अपने इनकम स्टेटमेंट को बिना कुछ हैम्पर किए हुए ये रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है यूनियन बैंक के कल हमने एनालिस्ट मीट की थी। एनालिस्ट में हमने देखा कि उनके सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एमडीज एंड वेरियस वर्टिकल के सीईओज अगर बैंक ने करंटली प्रोसेस को अपना डिजिटलाइजेशन के और एकदम तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और कैपेबिलिटीज ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज है। मैनेजमेंट का टारगेट है 1 करोड़ का कागा कस्टमर अगले 3 साल के लिए एक्वायर करेंगे। 50% इंक्रीमेंटल एडवांसेस जो कि रैम डिजिटली रहेगा और स्ट्रेस लेवल जो बैंक को है वो 15 to 16% रिड्यूस करना है 3 years के अंदर और अराउंड 3% FY23 में भी रिड्यूस करना चाहिए। मैनेजमेंट ने फर्दर एम भी किया कि ग्रॉस एनपीए उनको बिलो 6% आना चाहते हैं FY24 के लिए और स्ट्रॉन्ग रिकवरीज रहेगी 16,000 करोड़ के आसपास से। स्लिपेजेस भी वो लोअर करना चाहते हैं 12,000 करोड़ FY24 तक। मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया है कि एडवांस ग्रोथ है वो 12 से 13% तक डिपॉजिट्स में दिख सकती है और एडवांस ग्रोथ 12 to 13% तक सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ 10% के आसपास रहेगी FY24 में और मैनेजमेंट एकदम कॉन्फिडेंट है अपने लेंस को सस्टेन करने के लिए जो कि अराउंड 3% है और उन्होंने हाईलाइट किया कि आईटी रिलेटेड कैपेक्स भी जो 15 करोड़ के आसपास वो करेंगे FY24 में और वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं जो कि अपना फंड जो कि सभी का गाइडलाइन है 75% के नीचे जाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है इकोनॉमी को जैसे हम देख रहे हैं डब्ल्यूपीआई का डेटा है। डब्ल्यूपीआई का डेटा सेकंड मंथ रहेगा जो कि नेगेटिव था। लास्ट 1.92 नेगेटिव था, इस बार -3.48 है और ये देख रहे हैं लोवेस्ट 7.5 years में सबसे लोवेस्ट अभी तक का दिख रहा है। लास्ट हमने देखा था नवंबर 2015 में। एक्सिस बैंक में एक ब्लॉक डील होने वाली है। पेन कैपिटल है जो लाइकली स्टेक सेल करेंगे 267 मिलियन का और ये 1 to 1.5% कल के सीएमबी का डिस्काउंट करेंगे। केफिन टेक्नोलॉजी से कहा कि उन्होंने रिकंसिडर किया डिसीजन जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एलएसडी के साथ अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया है। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया था एलएसडी के साथ अक्टूबर 17 में। तेगा इंडस्ट्रीज ने भी कहा उन्हें फाइनल अप्रूवल मिल गया है कंपोजिट अरेंजमेंट जो कि निहाल फिजिकल सर्विसेज के साथ जो कि प्रमोटर तेगा इंडस्ट्रीज और मरुधर फूड के जो कि एमएम होल्डिंग ग्रुप से एक सारा प्रमोटर ग्रुप है जो कि एनएफसीएल बनेगा और एनएफएसएल बनेगा जो कि 1.96% इक्विटी रखेंगे तेगा में और एनएफएसएल बन जाएगा 57% स्टेक तेगा में रहेगा। आईओबी ने भी कहा है कि उन्होंने डिसाइड किया जो बेस रेट को 0.20 बेसिस पॉइंट से हाइक करने के लिए जो कि 9.1 है करंटली 8.9 और बेस इफेक्ट होगा 15 जून से। आईओसी ने सेटअप करेगी 80,000 टन का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि हरियाणा में रहेगा। ये कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को तेज करने का आसपास की इन्वेस्टमेंट कर दी है और इनकी ग्रीन फ्यूल एसोसिएशन प्राज के साथ उन्होंने टाइप किया महाराष्ट्र में। हीरो मोटो को अपनी टू व्हीलर लॉन्च की एक्सट्रीम 160 आरवी जो कि 127 लाख के प्राइस रेंज के साथ। इसी स्पेस में हम देख रहे जैसे हम सुनने में आ रहा है जैसे जेएसडब्ल्यू ग्रुप एकदम एक्टिवली एमजी मोटर में स्टेक लेना चाहता था। एमएनएमएल और अशोक लेलैंड भी इस रेस में आगे जुड़ गए हैं और इसमें स्टेक लेना चाहेंगे जो कि सिग्निफिकेंट स्टेक रहेगा अबाउट 51% जैसे जो कि साइड मोटर्स को फिर रिड्यूस करना है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। बीसीडब्ल्यू ने भी इन्फॉर्म किया कि कन्फोर्सिंग मैकेनिज्म के जो CO2 का गैस कन्फोर्स है जो कि सोडा ऐश प्लांट बनाता है जो कि उसके चलते 6 मेट्रिक टन का करंट क्वार्टर में गैस रिडक्शन रहेगा। दीपम ने ये कहा है कॉर्पोरेट के लिए दीपम ने कहा है कि वो सीख करेंगे इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप और टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो भी कॉर्पोरेशन स्टेक सेल के लिए गवर्नमेंट ने सेल करना चाहता है 12,000 करोड़ की ऐसा ट्रांसपोर्ट में। लास्ट अपडेट है आरईसी ने कहा कि वो एक मीट करेंगे जून 24 के लिए जो कि प्रपोजल रहेगा फाइनल डिविडेंड के लिए FY23 में। सो हम आते हैं अभी मार्केट में जैसे हम मार्केट्स देख रहे हैं 18,755 के आसपास का चल रहा है। हमें लगता है कि एक बार 1887 8900 के लेवल्स टेस्ट करना चाहिए। निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी टेपेड है, अभी भी एक रेंज बाउंड है 44,000 44,500। बैंक निफ्टी के लिए बेस हर्डल बन चुके हैं कि एक बार वो निकलता है तो हमें लगता है 45,000 या 45,700 निकल सकता है। क्या हमें लगता है बैंक निफ्टी शायद अगले 2 हफ्ते यही घूम सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाइस के ऊपर है। निफ्टी को अभी तक टेस्ट करना बचा है। सो निफ्टी में हमें यही लगता है कि यहाँ से अगर कोई भी डिप्स मिलता है 18,400 के आसपास में उसमें लॉन्ग करना चाहिए। मेजरली मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, टूवर्ड्स हायर साइड पे जाते हुए रहेगा। हाँ, कोई भी नेगेटिव्स तो अभी दिख नहीं रहे मार्केट में, तो हमें यही लग रहा है कि हमें लॉन्ग की तरफ ही खेलना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर द मॉर्निंग कॉल। यू मे नाउ डिस्कनेक्ट।